गाइस, दिस इज सोमदत्त और प्रीम यूनिवर्सिटी आज आपके लिए लेकर आया है एमए पॉलिटिकल साइंस 2021 का एमए एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो इस पेपर को देखने के बाद आपको लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आप अपनी तैयारी को उस तरह से ओरिएंट कर सकते हो और कैसे मतलब किस तरह से ऑप्शंस पर जो एमसीक्यू फॉर्मेट है उस तरह से कैसे प्रिपेयर किया जाए कि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन है जो बेटर ट्यून्ड हो सके। So, starting with the paper, first question is the skeptical view of globalization does not emphasize on option A. World was more globalized economically, politically, and culturally during 1870 to 1914. Option B. Present phase of globalization can be identified more with intensifying geopolitics than globalization per se. Option C. Present phase of globalization is more concerned about economic development of the global south. Option D, state power has increased and not decreased in the present era. See, as you can see, option is already highlighted the correct answer. I mean, the present phase of globalization is more concerned about economic development of the global south. ये इसका आंसर है। आप अगर डिबेट पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन की तो बेसिकली देयर आर थ्री व्यूज। फर्स्ट इज हाइपर ग्लोबलिस्ट व्यू है, जो फर्स्ट वेव भी बोला जाता है। उसमें कई कॉन्सेप्ट्स आए जब 1980s में, जब ग्लोबलाइजेशन को एक मेजर फिलिप मिला तो उस टाइम पर कि वर्ल्ड वाज बहुत तेज गति से ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। और उसमें ये मैक्लुहान का ग्लोबल विलेज, बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो ओहामे का था, और इस तरह के नेटवर्क सोसाइटी, इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट आए ये सारे के सारे उस टाइम पर आए। तो उसके बाद में जो आता है स्केप्टिकल व्यू, स्केप्टिकल व्यू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है ग्लोबलाइजेशन, मतलब अच्छा। और हाइपर ग्लोबलिस्ट व्यू का ये मेन प्लैंक था कि सोवरेनिटी जैसा कुछ रहेगा नहीं। जब बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो जाएगा तो ऑफ कोर्स देयर कॉस्मोपॉलिटन टाइप ऑफ अ थिंग है ना। तो स्केप्टिकल स्पेक्टिक्स बोलते हैं कि एकदम से एंटी व्यू है ना हाइपर ग्लोबलिस्ट का। तो ये बोलते हैं कि ये जैसे कि अगर आप सीधा आंसर की तरफ जाएं तो प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये लोग बोलते हैं कि इनइक्वल वर्ल्ड है और ग्लोबलाइजेशन कुछ पार्ट्स में हुआ है, कुछ पार्ट्स में नहीं हुआ है। दिस इज बेसिकली द स्केप्टिक्स व्यू। देन देयर इज दिस इन बिटवीन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशलिस्ट व्यू। जो लोग बोलते हैं कि कुछ इश्यू एरियाज में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, इकोनॉमिक एरियाज, और कुछ वर्ल्ड के कुछ पार्ट में और कुछ में नहीं बढ़ा है। और किसी एक पार्ट में जैसे इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में स्टेट की सॉवरेनिटी पर इफेक्ट हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ है। तो दिस इज बेसिकली द इन बिटवीन पोजीशन, द ट्रांसफॉर्मेशलिस्ट व्यू। इसी तरह से आप ये भी डिबेट पढ़ सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन पर है कि सोवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। Coming to the second question, Ranjit Guha's book A Rule of Property for Bengal is about which historical development of India? Option A, Macaulay's Minute on Education of 1835, Bentinck's social reforms of the 1830, the permanent settlement of 1793, the granting of the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company in 1765. रंजीत गुहा, जिन्होंने सबॉल्टन स्टडीज का शुरुआत किया 80s 90s में, उन्होंने ये बुक लिखी। इनका बेसिक जो द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रामसीज यूज ऑफ द टर्म सबॉल्टन, जिसमें मार्जिनलाइज सेक्शन की और हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो। ये बेसिकली ये सबॉल्टन थियरी जो क्रिटिक है नेशनलिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री और मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री का। तो इसके जितने भी स्कॉलर्स हैं उनका मेजर वर्क्स है अभी, जैसे पोस्ट कॉलोनियल और ये सबॉल्टन थियरी, दोनों से काफी किसी भी एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में सुन सकते हैं। तो इस बात को ओवर। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेसी जो 2015 में आया? ऑप्शन ए, इट वाज मेंट टू अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. Its composition did not include eminent persons from outside the judiciary. Option C, it was meant to replace the existing collegium system of making appointments to the judiciary. Option D, it was struck down by a ruling of the Supreme Court in October 2015. 2015 को स्टक डाउन किया था, ये पहले आया था जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में जब इलेक्शन हुआ, और उसके बाद में वन ऑफ द मेजर डिसीजन था मोदी गवर्नमेंट का कि एनजेएसी लेकर के आए, जिससे कि तो सुप्रीम कोर्ट, एज यू कैन सी द हाईलाइटेड पार्ट A, C and D are the
करेक्ट ऑप्शंस. इट्स कॉम्पोजिशन डिड नॉट इंक्लूड एमिनेंट पर्संस फ्रॉम आउटसाइड द जुडिशरी. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसको स्टेप डाउन करना पड़ा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का अनवारंटेड इन्फ्लुएंस था इसमें. लो मिनिस्ट्री से कुछ लोगों को इस अपॉइंटमेंट्स कमीशन में शामिल किया. तो उसके बाद से फिर से जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिस तरह से इसको फोर्थ जजेस केस भी बोलते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केस भी आप पढ़ सकते हो. और मेजर जजमेंट्स इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के हैं, बीट गोलकनाथ केस, मिनरेवा मिल्स, केशवानंद भारती केस. ये सारे जो मेजर इसमें जजमेंट्स है जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है. These things are worth going on. Next question is, the purpose of the veil of ignorance in a theory of justice is to, option A, prevent contractors from adopting principles of justice that unfairly advantage themselves. Option B, to make the decisions of which principles of justice to adopt that are simpler to implement. Option C, to ensure that the principles of justice selected are not too complicated for people to understand. Option D, all of the above. So, justice of Rawls theory of justice. वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है उसके जिसके पीछे की रैशनल नेगोशिएटर्स एक जस्ट सोसाइटी के लिए किस तरह का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए उसके लिए निगोशिएट करते हैं. तो उसके पीछे जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, तो उसमें कि व्हाट अ पर्सन कैन नो अबाउट हिज बैकग्राउंड, है ना. तो ये सब चीजें हैं. तो बेसिकली इसका मतलब यही था कि आप अनबायस्ड और एकदम से इम्पार्शियल होकर के एक जस्ट सोसाइटी के लिए जस्ट कॉन्सेप्ट, जस्ट जस्टिस. तो बेसिकली द मेजर प्रीमाइस बिहाइंड दिस concept of veil of ignorance is to prevent contractors from adopting principles of justice that unfairly advantage themselves. Next question is, which one among the following books is not authored by Partha Chatterjee? Lineages of Political Society, The Politics of the Governed, A Possible India, The Idea of India. The Idea of India, if you know, is a book written by Sunil Khilnani, I guess. Again, this question from contemporary political theorists in India, Partha Chatterjee, Sudipta Kaviraj, इनके जैसे मेजर कॉन्सेप्ट्स है. जैसे चैटर्जी का पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का डिस्टिंक्शन है, और नेशनलिज्म का क्रिटिक है बेनेडिक्ट एंडरसन की जो बुक है इमेजिन्ड कम्युनिटीज. इसी तरह से सुदीप्तो कविराज का जो आइडिया है इंडियन स्टेट पर, सिविल सोसाइटी पर, तो और जो कि मासेस और एलीट जो म्यूचुअल इनकॉम्प्रिहेंशन से, है ना. इस तरह से जितने भी आइडियाज है ये इसी लाइन में थिंकर्स है, और भी बहुत सारे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय रेस्ट्रिक्टिंग the role of which of the following can we evolve a cosmopolitan model of democracy as an ideal? Cosmopolitan model of democracy जो डेविड हेल्ड का, रीजनल पार्लियामेंट्स, ऑप्शन ए. accountability of international organizations, option B. legitimacy of transnational bodies, option C. nation states with sovereign borders, option D. तो कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को रियलाइज करने के लिए अगर आप पढ़े हो, देखा है आपने, तो आप देखो कि ये जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है, ये तीनों कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को एनहांस कर रहे हैं किसी न किसी वे में. लेकिन अगर नेशन स्टेट्स विद सोवरेन बॉर्डर्स होगा, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी हार्ड टू रियलाइज द कांसेप्ट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. इसी तरह से डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, कंटेस्टेटरी डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ये जो डेमोक्रेसी के डिफरेंट मॉडल्स है भी आपको देखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया makes provisions for the Public Service Commission for the Union and for the states? Article 315. मेजर आर्टिकल्स है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मेजर जजमेंट्स है, और जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट. Which one of the following is not a statutory commission? Option A, National Commission for Women, NHRC, National Human Rights Commission, the Election Commission of India, the Law Commission of India. जैसा कि आपको पता है, स्टेटूटरी कमीशन मतलब स्टेटूटरी बॉडीज आर दोज बॉडीज व्हिच आर मेड बाय द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट.
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिनके लिए प्रॉपर प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू मेक some changes in these bodies, they have to amend the constitution for the same. So this way, अगर आप और फिर then there are executive bodies, for example this planning commission, erstwhile planning commission, now नीति आयोग, तो उनको एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट है, एग्जीक्यूटिव अपने स्तर पर बनाता है, अपने स्तर से इनको डिसबैंड भी कर सकते हैं। और ये तो as for this question, you can easily see the Election Commission of India, the Union Public Service Commission, the CAG office, all these are constitutional bodies and not statutory bodies, and the other three are statutory bodies made by the laws of parliament. Next question, which article of the Constitution of India provides with presenting a statement of estimated receipts and expenditure by the government of India to the parliament every year? Article 112. Article 280, I guess, is about this Finance Commission. Article 86 is, you can see, these are the major articles. Next question, what was the 96th constitutional amendment of 2012 about? Option A, it pertained to cooperative societies. Option B, it introduced Part 9B into the Constitution, was seen as diminishing the authority of states or their cooperative societies. The Supreme Court of India recently struck down parts of this constitutional amendment. थोड़े दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था इसके ऊपर, क्योंकि इससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और इसीलिए कुछ पार्ट्स को इसको स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो A, B, C, D. If you see 4 or 5 questions are directly from this Lakshmikant book, or these are easy kind of questions. Next question, which of the following statements are from the judgment on the right to privacy? Again, question from constitution part, right to privacy जो पुट्टू स्वामी और 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फेमस जजमेंट था, जिसमें कि आर्टिकल 21 में ही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका इनहेरेंट पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। देयर आर नो सॉरी आई थिंक राइट आर्टिकल 21 is about life, and I'm getting confused a little bit, so again that is besides the point. Article option A, the government of India argued on the basis of judgment in Khadak Singh case that there is no specific right to privacy in the Constitution of India, correct? Option B, the court mentioned the case of Aadhaar and biometric attendance as a violation of right to privacy. Option C, judges quoted J.S. Mill's essay on liberty in the judgment. Option D, judges argued that fundamental rights cannot be seen in isolation from each other. So all of the above options are correct. जो मेजर कंट्रोवर्सीज है, मेजर बिल्स है, जैसे कि अभी डेटा अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उससे पहले ये भी डायरेक्टली प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो और भी जो पॉलिटी के बेसिकली जो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पार्लियामेंट के लॉज है, एग्जीक्यूटिव के उस पर रिएक्शन है। Which among the following statement is not a correct evaluation of the Right to Information Act RTI 2005? Option A, it changed the normative basis of government from secrecy to accountability. Option B, it required government offices to maintain records in the form which facilitates the right to information. It was drafted by the National Advisory Committee. Option D, an anti-corruption movement by laborers and farmers in Gujarat was the driving force behind the act. As you can see, the first is very general kind of an option, so you automatically know that this has to be the correct option. It required government offices. Again, it was drafted by the national. This is where you remember something. And then this, the last option, the Right to Information Act movement was led by a lady called Aruna Roy from Mazdoor Kisan Shakti Santan, an NGO based in Rajasthan. And then there are other social movements like this dam issue in Gujarat, Sardar Sarovar Dam and Medha Patkar. Then there was this Chipko movement. So these basically, many of the questions are put up from these social movements in different kinds of political science exams. Coming to the next question, the Prime Minister is more concerned about his power than about the welfare of Parliament. His energy is concentrated upon securing the success of his party.
His care is not always that Parliament shall do right. Prime ministers are known to have made Parliament do things merely for party advantage. All this is worth thinking over. अनके गांधी, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज जो उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक लिखी थी, उसका जिसमें वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे रेवोल्यूशनरी जो पीपल दैट वर बेस्ड इन फॉरेन एंड दैट वर लीडिंग दिस रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश. Again, major statements by Gandhi, Nehru, Ambedkar, Tagore, Indian political thought का part जो है. Next question: Who among the following is considered to be the chief proponent of the post-bureaucratic theory? Max Weber जिनसे शुरुआत होती है जो structured bureaucratic theory है. Warren Bennis is the correct answer. What is post-bureaucratic theory? Post in the sense that it is coming after bureaucratic theory, like post-truth. These words है ना, they have पोस्ट ट्रूथ तो अभी का वर्ड है ट्रम्प के आने के बाद का, लेकिन उससे पहले जो 1970s 60s 70s में जो एग्जिस्टिंग थियरीज थी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी जो उस टाइम का सोसाइटी था. फॉर एग्जांपल इन यूएसए इफ यू सी in the 1960s or 70s there were troubles in the society. The youth was then there was this Vietnam War, and then there was environmental movements, feminist movements. So उसी टाइम पर ये पोस्ट so to say post word existence में आता है, like post structuralism, post modernism, post materialism. तो post bureaucratic theory, you have to distinguish between this bureaucratic theory, what was the bureaucratic theory, and the post bureaucratic theory, then you can automatically realize that it would be the answer. ब्यूरोक्रेटिक थियरी है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पर्सनल जो अथॉरिटी है. तो पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक होगा, उसमें अगर आपको ब्यूरोक्रेसी को रेस्पॉन्ड करना है तो इट हैज टू बी somehow emotional, it has to be this personal kind of relations between the people and a close bond between the different organizations and all. तो जो हाईली स्ट्रक्चर्ड भी होता है ना, वो छोड़ करके उसमें थोड़ा सा इनफॉर्मेलिटी और इस तरह से, मतलब दिस इज व्हाट पोस्ट इज अबाउट. इसी तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म है जो मेटा नैरेटिव्स को बोलते हैं कि इनको डिस्कार्ड करो. या नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट एसोसिएट विद द प्रिंसिपल ऑफ फ्री स्पीच? ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन्स whatever this word, this is a book written by John Milton. Article 19 of the Indian Constitution. Option C, the First Amendment of the US Constitution. Option D, Article 360 of Indian Constitution. I think J.S. Mill, while writing on liberty, was highly influenced by this book, John Milton's. And then Article 19, it's about freedom of speech and expression. The First Amendment is again about the same kind of a thing. Article 360, I think, is about financial emergency. So around 6 to 7 questions are from this Lakshmikant part. Next question: in which of Marx's concepts is the idea of camera obscura mentioned? Alienation, commodity fetishism, ideology, surplus value. ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा, मार्क्स बोलते हैं कि जो आइडियोलॉजी है ये इट शोज द रॉन्ग पिक्चर ऑफ द सोसाइटी. जो बोर्जो आइडियोलॉजी है, तो ये अगेन एलियनेशन जो यंग मार्क्स में यू कम टू नोटिस, जो अल्थुसर जो डिफरेंशिएट करता है यंग मार्क्स एंड मैच्योर मार्क्स को. कमोडिटी फेटिसिज्म, सरप्लस वैल्यू जो दास कैपिटल का मेजर आइडिया है. इस तरह से मार्क्स के मेजर स्टेटमेंट्स, मार्क्स का मेजर बुक्स इन क्रोनोलॉजी, मार्क्स का जैसे रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट है जो उसका 18 ब्रूमेर से ये डिबेट शुरू होती है. तो इस तरह से मतलब यू जस्ट नीड टू नो द वर्ड एसोसिएशन पार्ट. ये बाकी जो डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ थिंकर और इस तरह से है, वो आपको एमए में पढ़ना होगा आई गेस. तो here in MCQ kind of a thing, you just need to know the basics of the thinker theory or whatever. Next question: which of the following are associated with the Vivekananda's philosophy?
Option A, if one religion is true, then all the others also must be true. Yeah. Option B, he addressed the delegates of the world's parliament of religions as sisters and brothers. Option C, he started a movement against the philosophy of Vedanta. Nahi, his philosophy was based on this philosophy of Vedanta. He critiqued, option D, he critiqued the modern reform movements of his time by suggesting that most of them were inconsiderate imitations of Western means and methods of work. So you can easily identify that she would not be the correct option. Again, one thing to mention that after this Modi regime, you will come to notice major questions from Vivekananda, Dayananda. There are matlab, fairly large number of questions from this section, so it is good going over these thinkers from Indian political thought. Savarkar, Dindayal Upadhyay. Which of the following statements is an attack on Rawls' theory of justice? Attack. Individuals born with different physical and psychological propensities will be unequally efficient transformers of resources such as primary goods. ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है अमर्त्य सेन का, जिसमें सेन रोल्स को क्रिटिक करते हैं. Rawls frees the idea of what is right and just from the idea of what is good for a person. There are many distinct goods and valuable ways of life. Rawls' conception of justice carries to a high level of abstraction the theory of social contract found in Locke, Rousseau, and Kant. So, as you can see, the first option is again जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक है रोल्स का, माइकल सैंडल, और ये जो वॉल्जर वगैरह लोग हैं जिसका कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है, माइकल सैंडल का जो एम्बेडेडनेस ऑफ द इंडिविजुअल है इन सोसाइटी एंड ऑल. देन दिस फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रोल्स थियरी ऑफ जस्टिस, ये भी आपको बढ़िया से रोल्स के बारे में, ये थर्ड क्वेश्चन है रोल्स का, रोल्स के ऊपर. रोल्स थियरी ऑफ इससे रोल्स की थियरी ऑफ जस्टिस बुक्स विच केम इन 1971 और समथिंग, इससे पहले एक डिबेट भी थी है ना, दिस डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, जिसमें कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी एज इट वाज उस 1950s में जो बिहेवियरल मूवमेंट आता है पॉलिटिकल साइंस में इन ऑर्डर टू मेक पॉलिटिकल साइंस ट्रू साइंस, तो उस टाइम पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी उस पर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, मतलब then came the resurgence with Rawls' theory of justice, जो social contract को यूज करके एक just society के लिए what should be the concept of justice के बारे में बताते हैं. Next question, which of the following statements go along with Dayananda Saraswati and his Arya Samaj movement? Option A, he was opposed to polytheism. Option B, he condemned idolatry. Option C, he argued that there was no need for an intermediary between God and his devotees. Option D, Vedas occupy a central position in his philosophy. As you can see, all the options are correct. दयानंदा के और भी कॉन्सेप्ट थे जिसमें कि वो मनु से थियोलॉजी का कुछ एक्सेप्ट करते हैं, देन ही ट्राई टू बैलेंस दिस विद दिस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो he was a contradictory thinker in some sense, you know. इसका जो शुद्धि मूवमेंट है, इसका जो गोइंग बैक टू द वेदास है, ऑल दिस मेजर, और उसके जितने मूवमेंट शुरू किए. Carol Gilligan's book In a Different Voice, while advancing her perspective on care, claims that her findings show that there is an association between moral orientation and gender, that previous thinking about moral development has been organized within the justice framework. See this In a Different Voice, जिसमें कि ये जो justice framework है, जिसमें कि manliness basically कि what is just, what is unjust, while it is what she argues, and this ethics of care, जिसमें कि women identified with different sorts of moral issues. Okay, let's come to the option 3. Women bring a different voice into the centers of power and morality. हाँ, जो कि justice framework है, which is mainly associated with man world, है ना. So In a Different Voice basically makes such a distinction between this justice and the ethics of care perspective.
attached with the man morality and woman morality respectively. इसी तरह से फेमिनिज्म पर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है, सेकंड वेव फेमिनिज्म है, इनमें क्या डिफरेंस है. सेकंड वेव फेमिनिज्म है, उसके बाद में भी इसमें जो लिबरल फेमिनिज्म है जिसमें बाद में बट जाता है, मतलब दिस सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म, देन दिस पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म. एंड सम मेजर अलग है ना सोशल, जैसे सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है बुक रिटन बाय, sorry I can't remember the right name right now. इसी तरह से woman is born not made, woman is made, she's not born. Okay guys, rest of the paper you will see in the second part. और आपको बाकी कोई क्वेरीज हो, कोई इशू हो इसके पेपर के रिगार्डिंग, और भी प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी मटेरियल, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके अलावा हम कोर्सेज भी रन कर रहे हैं फॉर हमें पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस, so you will find all that information in our telegram channel. Thank you for watching. Happy Republic Day.